Hello everyone. So NEET PG has been postponed. I think all of you know this by now. NBE, Ministry of Health and Family Welfare, just released a notice last night, like frankly, 12 hours before the supposed timing of the exam, notifying that NEET PG has been postponed to indefinite time. We don't know when the next NEET PG date will come. They have said that they will notify at the earliest when the next NEET PG will come. But in this video, I just want to talk to all of you that what is the next step for all of us? What is the road ahead? How should we now plan our studies as far as NEET PG is concerned? Okay, so this will be a 10-minute around video. I plan it around 10 minutes, not wasting your time much. All strength to all the students who are going through this stressful time. I know मैं अपोलोजाइज करता हूँ यार, एनबी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, तुम सब से बहुत गलत हो रहा है सबके साथ। नीट पीजी इतना ज़्यादा मौके बन गई है, फ्रॉम मार्च टू जुलाई टू प्रीपोनमेंट टू जून एंड नाउ अगेन पोस्टपोनमेंट टू वी डोंट नो व्हेन। ठीक है, सो माय सिंपैथीज टू ऑल ऑफ यू। स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस टाइम पीरियड। डिप्रेशन में नहीं जाना है हमें, ठीक है? गुस्सा आएगा, डिनाइल आएगा, बिच करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है? मेंटल हेल्थ हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निकाल दो भड़ास जिसकी निकालनी है, गाली दो सबको, दोस्त से बात करो, फैमिली से बात करो, बॉयफ्रेंड से बिच करो, बट जस्ट वेंट इट आउट, ठीक है? हियर टू मी इन दिस नेक्स्ट 10 minutes what my strategy for you for the next few months, or I don't know for how long, but how you should go ahead for the NEET PG. So this was the notice that came from the Ministry of Health and Family Welfare, that the NB ministry has decided to postpone it in view of irregularities, or maybe to undertake a robust assessment of the process of NEET PG examination. Okay, and they have said that they have decided as a precautionary measure to postpone NEET PG, and few teachers as well. There have been reports online on some news websites that the paper had been leaked. There were chances of paper being leaked, NEET PG paper being leaked, and hence it had to be postponed at the last minute. बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। Students have traveled from far off places. I know few students traveled from Qatar, from maybe, I don't know, 300 kilometers away. Few students 300 kilometers away to the exam center, stayed in a hotel, 4 to 5,000 per night. Their parents stayed with them. Family के साथ बहुत गलत हो रहा है, I know. All my sympathies to all of you. Stay strong in this time. Okay, now these developments we know come in a background of the broader NEET fiasco that has been going in the country lately. And you know, latest updates kya hai NEET fiasco mein? So we know that the NTA chief Subodh Kumar Singh has been removed from the NTA post. A new chief of NTA has been reinstated, Dr. Mr. Pradeep, retired IAS officer Pradeep Singh, and a lot of overhaul is going on in the ministry, the NTA, and other examination and bodies as well. So what I feel is that there is a check going on in all the public examination systems, not just NEET PG. I think JEE would also be affected, UPSC would also be affected. The Public Examinations Tackling Unfair Means Act has also been enacted lately. So there is a check and balances system going on right now, and that I think will continue for some time at least. Now other developments क्या क्या हुए हैं? NEET and NET paper leak में government has set up a 7-member reform panel लेटली, एंड उसमें कौन कौन है? उसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी हैं, हु इज द एक्स डायरेक्टर ऑफ एम्स. इट इज हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ, एंड दिस इज 7-member कमिटी, एंड it has to submit its report in 2 months. ठीक है, this is basically checking the malpractices in NEET examination. ठीक है, बट आई थिंक थोड़े चेक एंड बैलेंसेस नीट पीजी में भी होंगे, स्पेशली बिकॉज नीट पीजी पेपर लीक information is circulating in few groups and few news channels now. Okay, so if NEET PG paper has been leaked and the ministry knows about it, or the education ministry of family health, or the NB knows about it, NMC is aware about it from the cyber crime branch, because we know NEET PG is an online exam. If the government is aware about it, so a new NEET PG paper will be set up.
ठीक है, सो वी हैव टू रिमेंबर अगर नीट पीजी लीक हुआ है तो अ न्यू नीट पीजी पेपर विल बी सेट अप, नया पेपर बनेगा एंड दैट विल टेक अ लिटिल टाइम। ठीक है, आई कांट से कि नेक्स्ट 15-20 डेज में हो जाएगा नीट पीजी, आई डोंट नो, बट अ न्यू पेपर वुड टेक अ लिटिल टाइम। लॉजिस्टिक्स देखने पड़ेंगे हमें, एग्जामिनेशन सेंटर्स विच वर बुक्ड फॉर दिस नीट पीजी, द कंप्यूटर सेंटर्स, देयर अवेलेबिलिटी विल हैव टू बी सीन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रीड्यूटी असाइन होगी, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो आई थिंक 15-20 डेज से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक सीबीआई प्रोब हैज बीन initiated in the NEET UG scam, in the NEET UG fiasco which has been going on. So CBI probe has been ordered by the government and it will also report its findings soon. Okay, so lot is going on as far as checking things are going on. It will take time. That is what I feel. So आपको क्या करना है? What is the road ahead for all of us, for all of you, for everybody who is studying for this NEET PG? So first of all, take a break. ठीक है, I know कि lots of students, their parents are in shock. Even I am in shock. This has never happened, in the last 10 years, 10 to 12 years since I am in this medical space. I have never seen something happening like this just a day before the exam, and especially in a national level, all India level exam. यार state में maybe होते थे irregularities. स्टेट एग्जाम्स में सुनने में आता था कि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, बट नेशनल लेवल एग्जाम्स पे स्पेशली जब एम्स सीबीएसई कंडक्ट करता था तब नहीं होता था. सो दिस इज इवन शॉकिंग फॉर मी. टू टेक अ ब्रेक, गैदर योर सेल्फ टुगेदर. ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दिस इज just an exam. This does not define you, this does not define your intelligence, your knowledge, your preparation. This too shall pass. We will come out stronger from this. So अगर आप 2 to 3 days की ट्रिप प्लान कर रहे थे एग्जाम के बाद, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, गो हेड, डू दैट ट्रिप विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली, जिसके साथ भी यू आर प्लानिंग. यू डिजर्व इट. ठीक है, यू डिजर्व इट, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, यू हैव स्टडीड हार्ड फॉर इट. नाउ आफ्टर यू हैव डन टेकिंग अ ब्रेक, टेक अ पेन एंड पेपर, write down your weak subjects, your strong subjects. What were your lacunae? 19 subjects strong किसी के नहीं होते. ठीक है, मेरे भी नहीं थे, किसी टॉपर के भी नहीं होते हैं. So write down those weak subjects. Those weak subjects need to be worked upon now. ठीक है, so for example, if your anatomy is weak, it's the time to read anatomy. God has given you time to read anatomy now. ठीक है, depending upon what your weak subject is, read it. नाउ नोटिस, अगर री नीट पीजी का जब भी एग्जाम का नोटिस आएगा, आई थिंक एटलीस्ट 15 to 20 डेज मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड उस टाइम पर लास्ट 15 to 20 डेज रिविजन हम अगेन कर लेंगे. एंड जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, वट एवर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वी हैव फॉर दिस नीट पीजी, वो नेक्स्ट जब री नीट पीजी होगा, तब भी वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे. वी विल स्टिल बी एबल टू हैव अ मास्टरी ऑन देम, बिलीव दिस. सो अभी वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करो. टेंटेटिव एग्जाम डेट नोबडी नोज, बट आई थिंक इस होल फियास्को में जो एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है कंट्री में, एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा. 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है ऑन नीट पीजी. 4 petitions have been filed in the Supreme Court for hearing on 8th July. A lot of things will revolve around that. ठीक है, सो टेंटेटिव एग्जाम डेट इन माय ओपिनियन इज ईदर अगस्त और सितंबर. ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. अगेन दिस इज जस्ट माई बिलीफ, इट इज डेफिनेटली नो ऑफिशियल कंफर्मेशन हैज बीन देयर फॉर द टेंटेटिव एग्जाम डेट, बट वट एवर द डेट विल बी, आई पर्सनली बिलीव 15 to 20 डेज का आपको हमेशा टाइम मिलेगा. ठीक है, नाउ मोमेंटम, हाउ टू मेंटेन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल फेज, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. जब भी कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है, स्टूडेंट्स गेट शैटर्ड बिकॉज दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस एग्जाम टू गेट ओवर एंड मूव ऑन. ठीक है, सो आई एम विद यू, आई एम totally with you. Whatever guidance you need from me personally, you can like put it in the comment section. You can like DM me on Insta also. My DM Insta handle is Dr. Rishabh 2970. ठीक है, you can email me also on rishabhrke@gmail.com. ठीक है, I'll reply to your queries, whatever you want to talk about. But maintain some form of momentum. Now, how to
plan your next strategy. So depending upon what kind of a student were you when you were preparing for this NEET PG. So if the students who were on track for this exam, जिन्होंने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया था एक दो बार दो तीन बार, so for you guys, for the first set of students, I would say that to build your momentum, maintain your momentum, start giving GTs once a week. ठीक है, my earlier videos I am very against giving too many GTs, but you know, if you are well prepared for this exam, you had revised, had a strategy in mind to give for this exam. Now the revision is based upon GTs and MCQs. ठीक है, so GTs once a week, revision is via your MCQ from your Q bank. Study in groups. ठीक है, maintain a group study. क्योंकि you don't feel like studying alone, you know, whenever any exam gets postponed, you get a little relaxed, you get a little frustrated. So you know, if you're studying in a group, थोड़ा थोड़ा passive learning इधर उधर से होती रहती है. Now for students whose few subjects were remaining, so consider this as a blessing in disguise. ठीक है, you still have at least I think 1 month more to prepare for your NEET PG and strengthen your weak subjects. So जो weak subjects थे उनको अच्छे से पढ़ो, मेन नोट से पढ़ो और कंसाइज करके फनल डाउन करके रिविजन नोट्स में कंसाइज करो. कंसाइज योर मेन नोट्स इनटू रिविजन नोट्स बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज. ठीक है, फॉर वीक सब्जेक्ट्स. अगेन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, व्हाट टू डू फॉर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. सो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यू कैन टेक, मेकिंग कस्टम मॉड्यूल्स बेस्ड अपॉन एम्स, नीट पीजी. ठीक है, रिविजन वाया एमसीक्यूज फॉर व्हाटएवर पर्टिकुलर टॉपिक इन अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स यू आर वीक इन, उसके मेन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करो. बट योर फोकस शुड बी नाउ ऑन ओनली ऑन योर weak subjects and strengthen them. Now students who had just completed their internship maybe in March, April, उनको क्या करना है? For students who have just completed, again this is a blessing in disguise. If you were thinking that I'll start my preparation after 23rd June, this NEET PG is over, no, you have to start your preparation right now. ठीक है, अभी से start करना है. Your target is November INI-CT. You have to crack November INI-CT. ठीक है, give me this promise, you'll crack November INI-CT. नेक्स्ट नीट पीजी तक क्या करना है? अभी नीट पीजी की नेक्स्ट डेट तक क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफ खत्म करो अपना. फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉफ यू रिवाइज और रीड. अगर you haven't read even once, you read your first and second prof till your next NEET PG date. This is for all of you who have just completed their internship and are now preparing for the next year NEET PG, 2025 का NEET PG. 2024 के NEET PG तक whenever the next date is announced, try to finish your first and second prof subjects. ठीक है, this is from my side. November INI के लिए you have to target. Now, for all the students, we don't know when the NEET PG will happen. I would sincerely request all of you to keep November INI-CT also in the loop. You know, because let's say the exam by for any means gets scheduled to September. The counseling gets over early September, let's say mid September तक results आते हैं, end September तक the counseling starts, and October में counseling goes on, joining is in till November. So November INI-CT may not be a very far target. If the NEET PG gets postponed to let's say September, we don't know कब तक होगा. I don't know, I'm just guessing. So November INI-CT is also a potential exam for all of you NEET PG aspirants who are going to give this NEET PG. ठीक है, so उसके लिए strategy I have made it pretty clear earlier also. First and second prof heavy होता है INI-CT. ठीक है, first second prof heavy, plus minors, plus OBG, plus FMT. These are the all the important subjects you need to read for INI-CT. इनको focus करना है. ठीक है, keep INI-CT as a potential target also. Now maintaining a mental strength right now is the most important thing. Yes, बहुत tough है to recoup everything that you are going through. I would say talk to your family, bitch with them about the education system currently. Talk to your friends. आई पर्सनली वुड से कि एक छोटी सी ट्रिप मार लो, कहीं चले जाओ घूमने, पहाड़ों पे चले जाओ, गर्मी इतनी हो रही है, छोटी सी ट्रिप मार लो. you will come back stronger. And obviously this is just one of the hurdles that you will face in your life as a doctor. आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये भी पास कर लोगे, वो भी पास कर लोगे. ठीक है, दिस एग्जाम इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. ऑब्वियसली
ठीक है, नेक्स्ट नीट पीजी की डेट आ जाएगी, क्लियर भी कर लोगे, रेजिडेंसी भी स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा सब। डिप्रेशन में नहीं जाना है बस, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। एंगर, बार्गेन, डिनाइल सब चलेगा, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, माई होल सिंपथीज आर विद यू, may God give you strength to go through this phase. I hope this strategy helps few of you how to plan your next few days. We don't know when the next NEET PG date will come out, but I think एक महीना तो लगेगा, ठीक है। So all the very best for your NEET PG and keep your preparations in track on track. Thank you.